A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of subject economics. Dear students, in the previous lecture, we have started our first chapter out of the microeconomics, and the name of the chapter was Economics and Economy. And in the previous lecture, dear students, we have discussed about some basic concepts such as economics, scarcity, choice, and microeconomics and macroeconomics. Dear student, today in our second lecture, we are going to discuss about the left out part of the chapter, which will include the concept of positive and normative economics and types of economic systems. So, dear students, initially we will understand what is the meaning of positive economics. सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक इश्यूज. पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स की वो ब्रांच है जो कि इकोनॉमिक इश्यूज को स्टडी करती है, रिलेट करती है, रिलेटेड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. For example, the level of poverty in India at the time of independence, at present, and what would be the trend of the poverty in the future. So, it is an example of the positive economics. See further, it deals with such economic situations which can be studied by using fact and figures. ये basically उन particular concept से deal करता है जहाँ पे कि हम लोग study किसकी help से करते हैं? Fact and figure की help से. For example, 20% population is below poverty line, fact and figure. 35% population is unemployed. ठीक है, तो ये जो आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो कि आपकी क्या करती है, इकोनॉमिक्स की उन पर्टिकुलर स्ट्रीम्स को स्टडी करती है जो कि आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ रियलिटी, फैक्ट एंड फिगर्स. See further, the characteristics of positive statements. If we talk about the characteristics of positive statements, see the very first one. These statements highlight the nature and extent of the economic problem. ये वह हमको बताते हैं कि economic problem का nature क्या है और वो कितनी serious problem है. And on the basis of seriousness, the preference is given to the economic problems. Second, these statements are based on fact and figures related to past, present and future. और इन statements को हम कैसे study करते हैं? With the help of fact and figures related to the past situation and related to the present situation. और past और present के basis पे हम लोग future को anticipate करते हैं. थर्ड, दीज स्टेटमेंट्स आर वेरीफाइबल फॉर ट्रूथ. हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास हमेशा इन द बैकअप फैक्ट एंड फिगर्स अवेलेबल होते हैं. सी द लास्ट पॉइंट, दीज स्टेटमेंट्स डू नॉट रिफ्लेक्ट एनी वैल्यू जजमेंट और ओपिनियन ऑफ इकोनॉमिस्ट. यहाँ पे कोई भी ओपिनियन नहीं होती, कोई भी वैल्यू जजमेंट नहीं होता. इट इज़ ओनली अबाउट द रियलिटी व्हाट एक्चुअल इज. Now, comes the next concept, normative economics. It is just the opposite concept of the positive economics. Under the normative economics, the economics used to deal with what ought to be. What ought to be का मतलब क्या होना चाहिए. इट डील्स विद द ओपिनियन ऑफ द इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इशूज़. अब ये किससे डील करती है? डिफरेंट इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ आते हैं, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिस्ट के जो सजेशंस होते हैं ये उससे डील करती है. ओपिनियंस इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट्स. यहाँ पे क्या होते हैं? ओपिनियंस इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपको आपकी वैल्यू का जजमेंट करते हैं और किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं. इसके फीचर्स देखते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं बेटा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के. द वेरी फर्स्ट, दीज स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट. इन स्टेटमेंट में सिर्फ क्या होता है? वैल्यू जजमेंट होता है फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ अ सर्टेन प्रॉब्लम. सेकेंड, दीज स्टेटमेंट्स लीड टू कॉन्ट्रोवर्सीज एंड डिबेट्स. ऐसा हो सकता है कि जो आपके नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रोवर्सीज और डिबेट्स को क्या कर दें? जनरेट करें. फॉर एग्जाम्पल, द सब्सिडीज टू द फार्मर्स शुड नॉट बी गिवन. So might be there are a lot of people who will say no, it is to be given. तो it is just my own suggestion और opinion. ये किसी एक particular person का suggestion और opinion हो सकता है जिससे कि सामने वाला particular person ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्या करे? accept करे. तो यहाँ पे controversies और debate के chances होते हैं. Third, these statements indicate opinions and are therefore not verifiable for truth. यहाँ पे सिर्फ suggestions होते हैं इसलिए आप इनको ये verifiable for truth नहीं होते, आप इनको verify नहीं कर सकते. And the last point, these statements reflect what ought to be solution of economic problem. एक particular economic problem का क्या solution होना चाहिए ये उसको reflect करते हैं.
Now see the difference between the positive and normative economics. The very first basis deals with, if we talk about the positive economics, then it deals with the economic issues related to past, present and future. And if we talk about the normative economics, then it used to deal with the economic issues, with the economic opinions. Second basis, relate to. See, in the positive statements or positive economics, these statements relate to what was, what is and what would be. क्या था, क्या है और क्या होगा. But if you talk about the normative economics, then it always used to be deal with what ought to be, क्या होना चाहिए. इसके बाद third basis, that is the verification. So in the positive statements, verification is possible because fact and figures are there, and in normative statements it is they are not verifiable because no fact and figure in the backup is there. And the last one, that is involve. If we talk about the positive economics, then it does not involve any value judgment, but in the normative economics there is only value judgment in the part of the normative economics. So this is the difference between positive and normative economics. The next topic is economy and the economic system. Earlier also we have discussed about the meaning of economy, but again we are just going to see it. Economy is a system by which people of an area earn their living. बहुत स्ट्रेट वर्ड्स में कहा है कि इकोनॉमी क्या है, वो पूरा सिस्टम है जिससे कि एक पर्टिकुलर एरिया के जो लोग हैं वो अपनी लिविंग को अर्न करते हैं. See in the detail the nature and level of economic activities performed by the people in an area. एक एरिया में किस टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कितने लेवल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक डिटेल फॉर्म रिवेल करता है जिससे कि लोग अपनी लाइवलीहुड को अर्न करते हैं. उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमी बोलते हैं. So, dear students, if we talk about the types of economy, then you will see that there are three types of economy. The very first one is the controlled economy. इस इकोनॉमी को हम लोग सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं. एंड व्हाट आर दीज टाइप ऑफ इकोनॉमीज? दीज इकोनॉमीज आर कम्प्लीटली कंट्रोल बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी. एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जो कि कम्प्लीटली हर एक इकोनॉमिक आस्पेक्ट को रेगुलेट और कंट्रोल करती है. If we talk about the example of the controlled or the centrally planned economy, then China, Russia and North Korea are the some examples of the centrally planned economy or the controlled economy. Thereafter the next one, that is the market economy. These are the economies in which there is very national level of control. That means कि ना के बराबर यहाँ पे control होता है government का. So all the economic decisions are taken or based on the market forces. Market force पे depend करते हैं सारे decisions, and market forces are demand and supply. And if we talk about the examples of the free economy, then USA, UK are the examples of the free economy. And thereafter the last type of economy is the mixed economy. This is the type of economy which is containing the characteristics of controlled economy as well as the free economy, जिसमें आपका प्राइवेट सेक्टर भी एग्जिस्ट करता है, आपका पब्लिक सेक्टर भी क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, और दोनों मिलके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के वर्क को एग्जीक्यूट करते हैं. And India is one of the most prominent example of the mixed economy. So this is all about today, and this is all about the chapter as well. We have discussed today about the concept of positive economics, features of positive economics, normative economics, features of normative economics, difference between positive and normative economics, the meaning of economy, and last we have discussed the different types of economy, in which we have discussed the controlled economy, free economy and mixed economy. God bless you all.